हेलो 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 हेलो। हाँ सर, आवाज़ क्लियर आ रही है। हेलो हाँ, हेलो क्लियर आवाज़ है। हाँ, ओके क्लियरिटी है। ओके सर, थैंक यू। मैं हट जा इधर निकल जाए ना। हेलो। एक मिनट टाइम। हेलो हेलो। ये आपकी है। हेलो। सर स्पष्ट सर। कितनी देर में शुरू होगा? बस सर स्टार्ट कर रहे हैं। गेस्ट आ ही नहीं है सर। है? गेस्ट आ रहे हैं सर, मुझे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे सभी गणमान्य अतिथि हॉल में पधार रहे हैं। मैं छात्रों से आग्रह करूंगी कि वे तालियों के साथ सभी का स्वागत करें। सभी स्टूडेंट्स बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत सजी सज गया संस्था का प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। इस शिक्षा महल की नींव रखने वालों को मेरा शत शत अभिनंदन है। सर्वप्रथम इस संस्था के पितृपुरुष स्वर्गीय पंडित श्री TN मिश्रा सर के चरणों में मेरा शत शत नमन। श्रीमती सुधीरा शास्त्री मेमोरियल हॉल में उपस्थित सभी गणमान्य एवं प्रबुद्ध अतिथिगण, संस्था के प्रमुख पदाधिकारी, ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड पर जुड़ने वाले समस्त शोधार्थी एवं प्रतिभागी, समस्त संकाय सदस्य एवं सभी विद्यार्थियों, सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी व सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं कुछ समय आपको सबसे पहले संस्था के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना माननीय स्वर्गीय पंडित श्री TN मिश्रा सर के कर कमलों से हुई थी। सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहा खान की स्थापना 1984 में माननीय श्री TN मिश्रा सर के द्वारा की गई। इसी क्रम में सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा विद्यालय की एक और ब्रांच सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटड़ा की स्थापना सन 2003 में की गई। एजुकेशन के क्षेत्र में 2 विद्यालयों की नींव रखने के पश्चात शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान देने हेतु सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा महोदया डॉक्टर शोभा सुमन मिश्रा जी के मार्गदर्शन में सत्र 2006-07 में सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का शुभारंभ हुआ। यह महाविद्यालय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से अस्थायी संबद्धता प्राप्त है। सन 2006-07 में बीएड पाठ्यक्रम 100 सीटों के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें तीनों संकाय उपलब्ध थे। शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में 2 वर्ष अपनी गुणवत्ता साबित करने के बाद सन 2008 में महाविद्यालय को 100 और सीटों का आवंटन हुआ। महाविद्यालय की अगली उपलब्धि सत्र 2011-12 में UGC प्रदत्त NEC एक्रेडिटेशन है, जिससे ग्रेड प्राप्त कर महाविद्यालय MDS यूनिवर्सिटी का पहला निजी महाविद्यालय बना, जिसे ये ग्रेड प्राप्त हुई। थैंक यू एवरीवन। I feel immense joy and happiness in informing you that this has been the first time Central Academy Teachers Training College is organizing international seminar on the topic Strengthening of Industry and Academia post NEP 2020. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of might, similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. We will now have a traditional auspicious lightning ceremony as a tribute to Ma Saraswati and our founder, Pandit TN Mishra Sir. I would like Dr. Varsha Nalme Ma'am, Principal Central Academy Teachers Training College, to invite all our dignitaries and guests to please come for the lighting of the lamp.
हे विद्यादायिनी, हे हंसवाहिनी, करो अपनी कृपा अम्पर पार। हे ज्ञानदायिनी, हे वीणावादिनी, बुद्धि दे करो भव सागर से पार। हे कमलवासिनी, हे ब्रह्मापुत्री, तमहर ज्योति भर दे। हे वसुधा, हे विद्या रूपा, वीणा बजा ज्ञान प्रबल कर दे। हे वाग देवी, हे शारदे, हम सब हैं तेरे साधक। हे भारती, हे भुवनेश्वरी, दूर करो हमारे सब बाधक। मैं निवेदन करती हूँ हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नगेंद्र सिंह सर, श्री केसी मीणा जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर शोभा सुमन मिश्रा मैम, सचिव श्री आरुष-टी-एन मिश्रा सर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नेहा मिश्रा मैम से कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं निवेदन करती हूँ प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा नालमे मैम से कि वे सभी अतिथियों को ससम्मान मंच पर लेकर आएं। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ माननीय प्रोफेसर जे.एस. राजपूत सर का। सर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, NCTE के फाउंडर चेयरपर्सन हैं एवं NCERT के पूर्व निदेशक रहे हैं। सर हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं की नोट स्पीकर हैं। मैं सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी व सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हमारे मध्य सेमिनार के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर नगेंद्र सिंह सर उपस्थित हैं। मैं आग्रह करती हूँ संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर शोभा सुमन मिश्रा मैम व सचिव श्री आरुष-टी-एन मिश्रा सर से कि वे सर का बुके देकर स्वागत करें। सर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में रिसर्च डिपार्टमेंट के डीन व MDSU में शिक्षा विभाग के डीन रहे हैं। हमारे मध्य सेमिनार के वक्ता के रूप में श्री केसी मीणा जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करती हूँ संस्था की अध्यक्षा व सचिव डॉक्टर शोभा सुमन मिश्रा व श्री आरुष-टी-एन मिश्रा सर से कि वे सर का बुके देकर स्वागत करें। सर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कायड़ माइंस में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। हमारे मध्य सेमिनार के वक्ता के रूप में श्री नरेंद्र सिंह सर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करती हूँ संस्था की अध्यक्षा व सचिव डॉक्टर शोभा सुमन मिश्रा व श्री आरुष-टी-एन मिश्रा सर से कि वे सर का बुके देकर स्वागत करें। सर गांधी ग्राम सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट में सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हैं। हमारे मध्य सेमिनार के वक्ता के रूप में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने वाले हमारे आज के मुख्य वक्ता माननीय प्रोफेसर हरेंद्र सिंह जोधा व वक्ता नीतू एम शुक्ला मैम व श्री मनोज शारदा जी, आप सभी का मैं सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी व सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे मध्य उपस्थित हैं सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर शोभा सुमन मिश्रा मैम। मैं निवेदन करती हूँ सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा नालमे मैम से कि वे मैम का बुके देकर स्वागत करें। हमारे मध्य उपस्थित हैं सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी के सचिव श्री आरुष-टी-एन मिश्रा सर। मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर भागचंद बालोद सर से कि वे श्री आरुष-टी-एन मिश्रा सर का बुके देकर स्वागत करें।
हमारे मध्य उपस्थित हैं सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी की कोषाध्यक्ष डॉक्टर नेहा मिश्रा मैम। मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती दिव्या मेहरा मैम से कि वे डॉक्टर नेहा मिश्रा मैम का बुके देकर स्वागत करें। I now request Dr. Shobha Suman Mishra ma'am, President of Central Academy Education Society, to deliver the welcome address. Fellow members of the management, distinguished guests, media persons, participants, staff, and students. It gives me immense pleasure to welcome you all in this August hall as we herald the international seminar, Strengthening of Industry and Academia Post-NEP 2020, under the aegis of Central Academy Teachers Training College, Ajmer. National Education Policy 2020 was formulated with the primary objective of making India a knowledge superpower. Such an objective can only be achieved by fostering research and innovation in all of India's institutions. The bedrock to this deed being strong industry-academia interaction and synergies. The constantly changing paradigms and complexities of the industry, business, technical process, and people necessitate that these two come closer for greater benefit of both. A productive collaboration between these two is critical for the knowledge economy, and for that, the curriculum for schools, colleges, universities, and all technical and professional courses should also be designed in such a way that ensures that the education imparted should lead to creation of expertise and skills that the industry needs. And fortunately, the new education policy is set to help in this direction. Thus, we shall keenly observe the seminar as ideas and thoughts churn out of the discourse from our distinguished guests, speakers, research scholars, and students. I welcome you all on behalf of the Central Academy fraternity and wish the very best for the seminar. Thank you. Thank you very much, ma'am. Your thought-provoking address set a perfect platform for our speakers to deliver their presentations. I now take privilege to request Neha Mishra ma'am, Treasurer of Central Academy Education Society, to deliver the introduction of the chief guest for the day, Padma Shri J.S. Rajput sir. He is an Indian educationist, writer, and former director of NCERT. After his stint as professor at the Regional College of Education, Bhopal, during 1974 to 77, he served as the principal of the institution till 1988. He was appointed as Joint Advisor on Education to the Ministry of Human Resource Development, Government of India, a post he held till 1994. He was appointed as Joint Advisor on Education to the Professor Rajput was the founder chairman of NCTE, established in 1994, where he served until his move in 1999 to NCERT as the director. At NCTE, he started the innovative 2-year B.Ed course and regulated the distance learning B.Ed courses.
UNESCO has honored him with John Amos Communist Medal in 2004 for his contributions to the educational reforms in India, and he received the Maharshi Ved Vyas Award from the government of Madhya Pradesh in 2010. The government of India awarded him the fourth highest civilian honor of Padma Shri in 2015 for his contribution to literature and education. He has also completed a project aimed at achieving religious amity through education, and his book titled Education of Muslims in India was released by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, on June 15, 2015. Since March 2018, he is the representative of India in the Executive Board of UNESCO. In November 2018, he was also elected as chairman of the governing board of the Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development, a Category 1 UNESCO institute. These are just few of the countless achievements Sir has achieved in his expanding and illustrious career. We as learners will always look forward in taking inspiration from his enterprise. Thank you for joining us, Sir, today. Thank you so much, ma'am. With immense gratitude, I now request Chief Guest for the day, Padma Shri J.S. Rajput sir, to deliver his address to the seminar. Dr. Soha Suman Mishra, Professor Nagendra Singh, distinguished guests, colleagues, and friends. I'm extremely happy to be associated with this international seminar. Because of the various engagements that I had held earlier, the positions, I have attended a good number of international and national seminars. I cannot resist telling you about one of these. When my former student from Banaras, where I taught physics for 3 years, met me a couple of years ago and said that he's organizing an international seminar in the university. And he is my former student, so I must come. So I went there. After the seminar, as a teacher, I could not resist telling him, though he was a very senior person at that stage, I said, why you call it an international seminar? There are not people even from various states in this seminar. And the answer floored me. I had nothing else to say when he said, sir, are you not an international educationist? I thought when you come, I can name it as international seminar. I think Professor Harin Singh Jodha is joining us along with several others from outside India. And I wish this international seminar all the success. I also hope that after the seminar is over, people will remember and bring out some document, some publication, and it will not be forgotten just in the files. Well, I have gone very carefully through the brochure, and you are talking about the academia-industry interaction, how it can be strengthened, and how it can be made fruitful. This is one of the most pertinent things that has been coming up for all these years in our considerations in various policies. And let me tell you, in one way or the other, in the language of those contemporary times, it also finds a place in the Kothari Commission report, the 1968 policy, the 1986-92 policy, and the present policy. Language changes. You see, from audiovisual aids to educational technology to information technology, these are the changes that take place in any dynamic society, and they are taking place. So our language and usage may change, but the core intent of education remains the same. Even today, they are the same. And they are best expressed in several ways. One of which is that when a person, when an individual, when a child, when a young person goes to a university, why does he go there? Because society expects that this innocent person, unaware of the world, shall be transformed into a personality. The first task of the teacher training institutions is to transform a person into a personality.
And all of you are familiar what is the meaning of a personality. Moving slightly ahead, when I was the chairperson of the NCTE and we needed a Sutra Vakya logo for it, I met several scholars. And one of them gave me a small piece of shloka from Mahabharata Shanti Parv. And that is still there in NCTE, it has not been changed. It is Gurur Gurutamo Dhama. Normally we do not pay attention to it, but it has a lot of meaning. It says that the teacher transforms or the teacher leads from humanity to divinity. Now, this is a great mandate that your teacher training institution and your academy must be well familiar of. Because if you know the seriousness of the task, your whole approach will change. So what are you doing? You are transforming persons into personality. You are leading persons, young persons, from humanity to divinity. And this, to my mind, is something really great. The new education policy, we all are familiar, has several excellent statements. And why these statements have come up, I have some familiarity with them, and all of you are familiar that there are several new things. But the most important sentence is that this policy is prepared in the light of ancient Indian tradition of knowledge quest. This is the most important sentence. And why it has come up? In 1996, there was a, 1996, 97, 98, everybody was talking about what would be the future of any particular area in the 21st century. Some of you will remember 2K transition after in 21st century. So UNESCO also set up a commission, which is known as Delos Commission. And this Delos Commission tried to paint a global picture of what would be the shape of education in 21st century. The title of this report is Learning the Treasure Within. And this title has a lot of meaning. Learning the treasure within. This is exactly what Swami Vivekananda had told us. Education is manifestation of perfection already in man, already in person, already in man, already in woman. The title was an acknowledgement of the Indian tradition of knowledge quest, which says that learning has no limits. There are no limits to learning. It also reminds us of another thing. Of the 4 pillars that this particular report identified: learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. In this seminar, you are talking about learning to do, combined with learning to know, right? But when these two are taken up, the other two also become very important. Learning to be, person to personality, humanity to divinity. What type of individual you are developing? And if you interact from academia to industry, a very significant factor for you to consider in the human resource development would be learning to live together, learning to work together, learning to progress together, learning to develop together, and learning to achieve excellence. J.R.D. Tata once wrote a very small sentence which I like and I repeat it many times. He said, aim at perfection. Aim at perfection, you will achieve excellence. If your goals are higher, and they should be higher, they should be readjusted every time you review your functioning. Excellence is the objective. Nobody achieves perfection except the one. But anybody can attempt to march on that path, and this applies to knowledge quest also, and this applies to every other thing. And in the current times, another thing has come up, which our tradition, because I am going to tell you why this
sentence has come up in the policy. प्राचीन भारतीय शिक्षा संस्कृत के आलोक में ये शिक्षा नीति तैयार की गई. ये एक सेंटेंस है जो सब कुछ कह देता है. आपने सुना है, all of you have heard about this, यावत जीवेत अधीयते विप्रा. The wise person continues to learn throughout his life. People do not become old because of age. They become old when they stop growing up. बड़प्पन होना चाहिए. Growing up requires learning from life. So lifelong learning is another sentence that finds a mention in that policy and also finds a mention in our education policy. Now this lifelong learning will help in this interaction, in the qualitative enhancement of the interaction between academia and the industry. Why are we thinking of this? It is not only for jobs. Our basic objective towards this particular interaction suggestion is how to achieve excellence in whatever is being done in the industry, whatever is being produced, excellence, betterment of the product. And why I am saying this is, you see, in 1955 or so, in UP and I think in other places also, in my own village, I had heard, if there was a product purchased by anybody and it was hopeless, turned out to be hopeless or useless, you know how it was described? Oh, Japani maal hai, feko. That was the reputation of Japan. Japan, the nation which was most humiliated, destroyed, destructed in the World War, in Second World War. Its products were very weak in quality, laughable. And what happened in 1980? The best product comes from Japan. I think all of us know. So I used to ask this question from people when I visited Japan. Every time I would pose a question to some knowledgeable person, how could you achieve it? How could you achieve such a transformation in your industry? And you know what was the answer? The answer was, we focused on our primary schools. We focused on our primary schools for the transformation of a nation which was in great depression and dejection. What did we do? We went to our teachers and said, you are the most important person, you are the key factor, you are the core element that can help Japan regain its prestige and place. If you follow a work culture, everything will improve. If you value time, everything else will improve. And this is what Gunnar Myrdal has also written in his famous treatise, Economics People Must Be Knowing. It came in 1968-70. Asian Drama was the title. There were 2 volumes. And he said, quality in any country, in every sector, will flow from one source. And that source is teacher education institutions. Whether you are producing cars, or medical equipment, or steel, never forget that the quality will depend upon what is happening in the teacher training institutions. If teacher educator is sincere, if he knows what is acharyat, what is the meaning of his being an acharya, he is true to his job, his commitment, his competence, and his performance are acharan ke yogya, are worth being emulated, you will get quality everywhere. Teacher educators will produce teachers who will go to schools and perform their task of transforming from person to personality. If teacher educators are sincere, respected in the society, your doctors will not be late in the hospitals. Your workers will always be willing to help their organization and have a feeling, which Japan cultivated. Whatever I am doing, whether I am sweeping the floors, or I am doing research, or I am working in space technology, I am doing it for the country. I am doing for the betterment of my nation.
I am a builder of this nation. This feeling has to be generated. If an academic person goes to industry, first thing he would has to do is to learn. He must have the attitude of lifelong learning. Otherwise, the purpose will not be served. There is no point in saying so. And therefore, our people have realized this much earlier, and they are given us this famous sentence, Yavat Jivet Adhyati Vipra. There is so much else in our culture that can be mentioned here in this context. And I think those from the industry will be talking more about that part. But let me tell you, we have a treasure of knowledge which we need to explore. The unfortunate part is that we are not able to bring out these gems from this treasure to our young children at the right age because of many considerations which all you know. But I will mention one particular thing. Vidya Dadati Vinyam. Very simple. If you are a graduate and when you become a postgraduate, have you really become more humble? Are you more beneficial or not? This is one test that can be applied to anybody, whether he is really growing up in education or growing up only in degrees. But see, the essence of this will come in the last three words. Vinyadyat patratam. Only the vinayशील becomes eligible. समाज के लिए वही उपयोगी है जिसके अंदर ज्ञान के साथ साथ विनयशीलता बढ़ी हो, अन्यथा उपयोगी नहीं होगा, उसका आचरण सही नहीं होगा. पात्रता धनम आपनोत. Once you are eligible, once you are vinayशील, you must earn. Very essential. Earning is necessary. We in industry prepares young persons, trains them to earn. Earn through right means. Earn through values. Imbibed internally. Values internalized. Vinyad at patratam, patrata dhanam apnoti. Then the last sentence, a wonderful sentence. It is full of potential for all of us to practically remember it every day in our life, and that is dhanad dharmam tata sukham. Dhan will not bring you sukh unless until there is another stage which you cross, and that is dhanad dharmam tata sukham. Dharma, sad acharan, the righteous conduct, total acceptance of human values, constitutional values, democratic values, scientific values, humanistic values, ethical values. Because otherwise, you cannot be transformed into a personality. Industry can be one of the wonderful places where you develop a work culture. Everybody praises. In Japan, if a particular train compartment comes on the platform at say 8:23 a.m., it will come at 8:23. It will not come at 8:24. How could they achieve it? Because their primary teachers took up the responsibility to prepare young people at that stage, which is the most impressionable stage of their life. And there we got this. I had a couple of other things also which I thought I could mention. This is from Rigveda. Ajestaso akanisthas ete sambhrataro babradhu saubhagaya. Meaning is very simple. No one is superior or inferior. All are brothers. All should strive for the interest of all. All should strive for the interest of all and should progress collectively. Very simple. There are many other statements like this. When a professor goes to industry or an industry person comes to an educational institution, one of the basic essential is to remember that even the last person in the line is how important is his role. This is what Gandhi wrote when he read the book Unto This Last, and has mentioned in great detail about it in his autobiography. Unto this last, he says, there he learned Sarvodaya.
And he says the last work is as important as that of a barber. John Gardner wrote a book, Excellence, which has been read for the last 30, 50 years in great numbers. He says that a society progresses only when it gives equal respect to a plumber and a philosopher. But unfortunately, as you will find, the academic person would say, oh, industry, they are producing something, I would like to brush off. That is not the right thing. That attitudinal transformation is to be achieved. And this particular statement I would like to read what Gardner has said. I would like to read this because I am deeply impressed by this. John Gardner, a distinguished thinker who in his multifaceted career was also Secretary of Health and Education in the United States, wrote this monumental book, Excellence. It is small in size, but large and in-depth ideas and wisdom. Now, what his sentence as a quotation is, we must expect students to strive for excellence in terms of the kind of excellence that is within our reach. Now, only such persons need to be exchanged in this interaction who have an aptitude to learn more and are particularly interested. You cannot achieve excellence in any area that is thirst upon you. That has to be avoided. And that avoidance is necessary. From this one sentence, I have derived this. And that is why people are there they study right from class 1 onwards, what is the interest of the child. Those countries which nurture the talent, they actually excel in this particular part. If a person is interested in manifesting things, in constructing things, he should not be sent to IAS or something like this. Only then you nurture your talent. He says, we must recognize that there may be excellence or shoddiness in every line of human endeavor. Very significant. We must learn to honor excellence in every socially acceptable human activity. However humble the activity may be, we scorn an excellent plumber, but give respect to a shoddy philosopher. Because this is how society works. This should not be the case. He says, an excellent plumber is definitely more admirable than an incompetent philosopher. The society that scorns excellence in plumbing because plumbing is a humble activity and tolerates shoddiness in philosophy because it is an exalted activity will have neither good plumbing nor good philosophy. Neither good plumbing nor good philosophy, neither its pipes nor its theories shall hold water. This, to my mind, is the essence of whatever you are going to do over here and discussing here in this seminar. This is what we have to do. Now, let me come back to a couple of other things also. What more can be nurtured in this industry-academia interaction? I will refer to things from a point of view of an educator. We all know about Swami Vivekananda. We also know that we have a lot of things from Gandhiji on education. And Gandhiji has given us a matrix. He said, education must draw out the best out of head, hand, and heart. Head, hand, and heart. What are we doing here? We are talking about head and we are talking about hand. But there is also something that is necessary, and that is the heart. Gandhi was very particular about it. Then the same thing is expressed in another form also. First is head, hand, and heart. The second is body, to draw the best out of body, mind, and spirit. Heart, spirituality comes in. And the third manner is self, society, and nature.
I call it 3 by 3 matrix, which all our education people know very well, but which our industry people should also know very well. I hope many of them know it and they work according to this, but it's worthwhile being revised and recalled. Head, hand, and heart, body, mind, and spirit, self, society, and nature. These are the things required. There are many other things that one could find out, but this is what I thought I would emphasize. I would like to refer to Gurudev Tagore and see how he is relevant in this context. Gurudev had a very poor schooling. Whatever schooling he had, he did not have much. He studied at his own place. But about one teacher he has wrote, then when I used to see that teacher, he looked to me a cane personified. Cane personified. वो मुझे वेद दिखाई देता था, अध्यापक नहीं दिखाई देता. And you know what happened? Even wrong things have positive things. He decided to have his own system, system of education and successfully did it. And the whole world recognizes it. Now I will give you two words which I think you will remember. He said, every child at the time of birth gets two gifts from God. And these are power of ideas and power of imagination. Now please see, power of ideas and power of imagination. Every one of us has seen this particular aspect in children in our home. Nobody can say he is not familiar with. See any child, 1 year, 2 year, 3 year, you will find ideas, you will find imagination. When I talk about it, I add two more words just to make it more comprehensible. That curiosity and creativity, they generate from ideas and imagination. Who has not seen a child, curiosity in a child or curiosity in a child? All of us have seen. And therefore, Gurudev wrote that unfortunately our education system persistently tries to impede these ideas and imagination. Whether it is industry or a training institution or a college or a university or a research laboratory, they all flourish on ideas and imagination. And when Gurudev says our education systems invariably try to impede these, he has a point that we must consider. Are our curricula, are our procedures impeding this? I am told, and I have seen myself, that all big industrial establishment keep a window open for new ideas and very seriously examine them. Now, if in education you train a person right from this, encourage his ideas, encourage imagination, respect his curiosity and creativity, innovations would come in droves. Research would achieve a much higher level. This is how, and this will happen in academic institution, it will happen in industry also. After all, industry moves ahead. The new generation, next generation industry also comes because of hard work, because of research. And so we should remember these two words of this great educationist, Gurudev Rabindranath Tagore. I would also mention in short about Shri Aurobindo, because he is a wonderful person, wonderful postulates that he gave us. He has given three. I put it in 3 sentences. One, move ahead from near to far. Every B.Ed person knows this. From background knowledge to you add. Okay. But the second sentence is very important. It says, mind must be consulted in its growth. When I was talking of excellence, when I began, I said excellence in the area in which the person is interested. This has to be ascertained in consultation with the person. And about this, Tagore wrote, the mind must be consulted in its growth. Whatever is the stage of the child, you have to study the child, you have to study the young persons, you have to study the worker. What is his interest?
And if you can inspire his interest, if you can ignite his interest, you will succeed. Our initiative for this interaction will also succeed. And the third is most important, which Vikananji also has said many times, but Gurudev said it, Shri Aurobindo mentions it, and it's a very famous sentence, says, nothing can be taught. Everything can be learned. Everything can be discovered. When we think we are teaching the child, actually the child is discovering. This can be discussed in great detail, but this is what we have to find out. And there is ample scope for discovering new ideas and new procedures and new products even in industry, and this has been happening. Our job is to enhance, to accelerate that process, and for acceleration, my prescription would be go to schools. Go to the sensitive ears of the children, because nothing more would be good. I think I will not take more time. This is all. I would like to finish by referring to one or two things more, which I think would be very relevant. When we say that it is light of ancient Indian tradition of knowledge, our policy will be developed. The background behind it is that we had to do with a transplanted system of education, which was meant for preparing a certain small group of people who would be educated to help the alien rulers in their low category jobs. After independence, we expanded the same system meant for few, we universalized it, and it came to a bad situation. The reputation of our primary schools went down. The reputation of our teacher training institutions, I would not use any terms, but would say, and I must hold my own responsibility, because I had formulated the NCTE Act in the ministry as the Joint Secretary, and I was the first chairperson. And we have closed down correspondence courses in great universities like Annamalai, Kurukshetra, and others, which we felt in the NCTE that they were earning money and not providing the quality. I have referred to Gunnar Medal. I often refer to Gunnar Medal, which says that every quality, every culture, every work culture will depend upon how your teacher education institutions are functioning. Because you are a teacher training institutions, you must be aware that Justice J.S. Verma, who was also former Chief Justice of Rajasthan and was the former Chief Justice of Supreme Court, and I had the privilege of working with him in several committees. In 2012, he headed a committee on the NCTE. And the report says something which must make all of us sit up and think. The report says that there are 10,000 in 2012. It says there are 10,000 teacher training institutions which are not interested in quality. They are interested only in commercializing teacher education and selling degrees. Any teacher training institution must consider it. मैं इस category में तो नहीं हूँ. And because nothing changed even after the report coming from such a high person, former Chief Justice of the Supreme Court of India, it is repeated in para 15.2 of the National Education Policy 2020. It has been repeated verbatim. So the task before you is much more difficult, much more stupendous. How do you move ahead? On one side, Gunnar Middle says everything will depend upon teacher education institutions. On the other side, you have maintained those 10,000 teacher training institutions that are commercializing teacher education, and you are repeating the same recommendation in 2020 education policy. That means something is seriously wrong, and it is not necessary to expect only the governments to improve upon it. It is also desirable
that we as teacher educators hold our responsibility. It may not look nice, but I must tell you that these 10,000 institutions identified by Justice J.S. Verma were all approved on the recommendations of 3-member expert committees which has gone to them. That means 10,000 into 3, 30,000 teacher educators had put up their signatures on the suitability of the institutions which are only commercializing teacher education and selling degrees. Now imagine how much harm it will happen to the generations ahead if a teacher is not familiar with the basics of teaching pedagogy, the psychology, understanding, all those things, and philosophy of education. This is something which has to be prevented by the younger teacher educators of the country. We have made our mistakes and we have done our job. How so shaddily it has been done, but something has to be done. And therefore, in these seminars, let us discuss everything, but also remember that institutions where it will be implemented. What is happening? In 1922, Mahatma Gandhi published 7 social sins. 7 social sins. And these include, what do they include? Wealth without work is a sin. Politics without principles is a sin. Science without humanity is a sin. Commerce without morality is a sin. And so on. We are not even familiar with this. But the man has a vision. He had told us all these aspects have to come in the teacher education and the life of a teacher, also in industry. Why should it not be possible for an industry to say that we follow certain values? There was a person named Dr. Ram Manohar Lohia. As young persons, we used to respect him. A very analytical and critical mind. He said there must be a relationship between the cost of production and the MRP. And there should be a commission for this. These days, in times of liberalization, it will not be accepted. But industry also has a role. As I have mentioned about the negative part of the teacher education, which needs to be corrected, let me also mention that industry also has to know that wealth without work and commerce without morality are also included in the 7 social sins identified Gandhi. If the cost of production is 100 times, 50 times that of the selling price, if the selling price is 50 times or 100 times, I'm told it is even more in some cases, then we are not true to the society. We do not come in that category. All should strive for the welfare of all. Basic principle is this. This is the Vedic wisdom. All should strive for the welfare of all. We have to bring this. If this policy has to succeed, it will not only be on numbers and these statements and that statements, it will depend upon how far we have brought morality into our actions at individual level, at institutional level, in the production house, in an industry, because eventually this is what will matter. I'm extremely happy to be associated with this. Dr. Nagen Singh when he asked me, I said, I get a lot of invitations from teacher training institutions, but I put certain conditions. And then after my conditions, they don't come back to me. So he has given me a guarantee and spoke very high of your institutions. I'm very happy to be associated with an institution which is following certain values. And I am sure after this particular seminar, they will become more conscious of their obligation to the future generations. Gandhiji has written at one place, my mother told me, 2 things he mentions. If you can save the life of a person, if you can and the other is, if you can shape the life of one person, your life is successful. And as teachers, we have the privilege of shaping
lives of not one or two persons, hundreds of persons. All of us have done it. Even if it's a slightly self-aggrandizement, I would say, yes, I have done it. You have also done it. Be conscious of it. And remain conscious that you are shaping the lives of so many. Only teachers have this privilege. Nobody else has this privilege. And another sentence which I am very keen to mention that Gandhi wrote was, he wrote a letter to the Director General of UNESCO in 1947 or so. When he was given the Universal Declaration of Human Rights Charter, he was given a draft. And the UNESCO Director General asked for the opinion. He wrote a small 4-5 line letter which is available on internet. The meaning is, if everyone does his duty, everybody else will get his rights. किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से पालन करे। ये एक वाक्य ऐसा है जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम बना देता है, और मुझे उम्मीद है कि आप में बहुत से लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। मुझे आपने आमंत्रित किया, आपकी अध्यक्षा मेरे आई, हालांकि मैंने मना किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो ऊर्जा उन्होंने आने में खर्च की उसका और उपयोग संस्था में ही होना चाहिए था, और ऐसी चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ भी कर देते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह मकसद सफल हो और इससे अच्छे परिणाम निकले। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। आपके अनुभवी व प्रेरणादायी विचारों से हम सब बहुत प्रभावित हुए हैं। जिस विषय से अभी तक हम अनभिज्ञ थे, आपने उस पर प्रकाश डालकर हम सबको अनुग्रहित किया है। हमारे स्टूडेंट्स जो कि भावी शिक्षक हैं, उनके लिए भी ये विषय बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में माननीय श्री नरेंद्र सर को इनवाइट करने से पहले मैं आप सभी को उनसे परिचित करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर नगेंद्र सिंह सर MA M.Ed एवं PhD हैं। सर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में रिसर्च डिपार्टमेंट में भूतपूर्व डीन रह चुके हैं। साथ ही सर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में भी शिक्षा विभाग के डीन रह चुके हैं। मैं प्रिंसिपल मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वह आकर मंच पर सर का परिचय दें। हेलो। सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी और सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा आयोजित इस इंटरनेशनल सेमिनार में आप सभी सम्मानित अतिथियों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में इतने सम्मानित अतिथि उपस्थित हैं। उनके ज्ञान से, उनके मार्गदर्शन से हम इस सेमिनार को सफल बनाएंगे। सेंट्रल एकेडमी की स्थापना पंडित TN मिश्र जी के द्वारा की गई थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में सेंट्रल एकेडमी की लगभग 150 ब्रांचेस संचालित हैं। सेंट्रल एकेडमी अजमेर की स्थापना लगभग 35 वर्ष पूर्व श्री मिश्र जी के द्वारा की गई थी। सन 2006-07 में प्रेसिडेंट सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर शोभा सुमन मिश्र के अथक प्रयासों से B.Ed कोर्स का आरंभ किया गया था। NCTE रिकॉग्नाइज्ड एवं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के आरंभ में 100 स्टूडेंट्स तीनों स्ट्रीम्स के साथ में को एजुकेशन के रूप में हमने इस कॉलेज को आरंभ किया था। 2008 में नए इंटेक के साथ हमें 200 स्टूडेंट्स मिले। 2012 में महाविद्यालय को UGC NEP के द्वारा एक्रेडिटेशन प्राप्त किया। 2016-17 में महाविद्यालय को MDS यूनिवर्सिटी से PG कोर्स के रूप में M.Ed की प्राप्ति हुई, और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि MDS यूनिवर्सिटी में एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है जहां पर PG कोर्स संचालित किया जा रहा है।
शत% एडमिशन्स और रिजल्ट्स के अलावा हम शोध कार्य में भी अपना योगदान दे रहे हैं। वर्ष पर्यंत विभिन्न एकेडमिक एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, कल्चरल, स्पोर्ट्स, साहित्यिक, सांस्कृतिक और क्लब एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स और इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल सेमिनार, नेशनल सेमिनार, वर्कशॉप्स, सेलिब्रिटी लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स, वर्कशॉप्स आदि का समय समय पर महाविद्यालय के द्वारा आयोजन करवाया जाता है। यहाँ से पास आउट अधिकांश विद्यार्थियों का सरकारी नौकरियों या प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट हो चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय अपना अग्रणी स्थान रखता है। आज के इस आयोजित किए जाने वाले सेमिनार का विषय स्ट्रेंथनिंग ऑफ एकेडमिया एंड इंडस्ट्री पोस्ट NEP 2020 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि वर्तमान शिक्षा की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है, समय है कि हमारा शिक्षा जगत थ्योरेटिकल नॉलेज और कक्षा क्लासरूम टीचिंग से बाहर आकर अपना विस्तार करें। प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में हम स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें और यही NEP 2020 का लक्ष्य है, जिसे लेकर आज इस सेमिनार का हमने आयोजन किया है। यह मंच हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। महाविद्यालय के द्वारा हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रदान कर रहे हैं जिसके द्वारा ओपन डिस्कशन के द्वारा हमारे शिक्षाविदों की उपस्थिति में, हमारे विद्वान लोगों की उपस्थिति में इस विषय पर कुछ विचार विमर्श और चर्चा का आयोजन कर सके। मैं विश्वास करती हूँ कि हम अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। धन्यवाद। थैंक यू मैम। कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं प्रोफेसर नगेंद्र सिंह सर को आमंत्रित करने से पहले उनको आप सबसे परिचित करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर नगेंद्र सिंह सर MA, M.Ed एवं PhD हैं। सर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में रिसर्च डिपार्टमेंट में भूतपूर्व डीन रह चुके हैं। साथ ही सर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में भी शिक्षा विभाग के डीन रह चुके हैं। सर MHRD न्यू दिल्ली के द्वारा रिसर्च व शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु लंदन, कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, मिशिगन, ओंटारियो, कनाडा आदि देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं। सर को NCERT के द्वारा कई प्रोजेक्ट से जूनियर व सीनियर फेलोशिप से जुड़े हुए हैं। सर को विभिन्न उच्च स्तरीय निकायों की सदस्यता व लीडरशिप प्राप्त है, जिनमें नीपा, नेशनल रिसर्च ग्रुप, सर्व शिक्षा अभियान, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कन्वीनर व बोर्ड मेंबर, भारत के उत्तरी क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के चयन बोर्ड के अध्यक्ष, विभिन्न B.Ed कॉलेज के इंस्पेक्शन टीम इंचार्ज एवं सर्व शिक्षा अभियान में उत्तरी भारत के नोडल अधिकारी रहे हैं। सर MDS यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई अन्य विश्वविद्यालयों के सिलेबस व कोर्स डेवलपमेंट में भी अपना विशेष योगदान दिया है। सर के अंडर में 20 स्टूडेंट PhD अवार्ड हो चुके हैं एवं 18 नेशनल व इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च प्रोजेक्ट सर के द्वारा कार्यान्वित की गई है। देश भर के 10 से अधिक विश्वविद्यालयों के थीसिस मूल्यांकन करता है। 200 से अधिक इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर व रिसोर्स पर्सन रहे हैं एवं सर के 30 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पेपर पब्लिश हो चुके हैं। सर के परिचय से हम सहज ही सर के अनुभव को समझ सकते हैं, इसलिए सर के अनुभवों से अनुग्रहित होने हेतु मैं निवेदन करती हूँ माननीय प्रोफेसर नगेंद्र सिंह सर से कि वे मंच पर आकर इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर JS राजपूत सर, जिन्होंने
वाकई अपने इम्पोर्टेंट टाइम, जो कि हमें नहीं पता उनके नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कमिटमेंट्स कितने हैं, लेकिन उन सब को भी ध्यान में रखते हुए डॉक्टर शोभा सुमन मिश्रा जी, प्रेसिडेंट सेंट्रल एकेडमी सोसाइटी अजमेर के इनविटेशन को स्वीकार किया, तो सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये आज के दिन ऐतिहासिक नींव रखी। अभी तक तो सुनता ही था ग्लोबलाइजेशन के दौर में कि ग्लोबल टू लोकल, ये एक स्लोगन सा लगता था, लेकिन वास्तव में इस इंटरनेशनल सेमिनार, जिसको कि एक प्लेटफॉर्म इस सेंट्रल एकेडमी सोसाइटी ने दिया है, उसका शुभारंभ करके पद्मश्री प्रोफेसर जे.एस. राजपूत आपने हम ही को नहीं, जितने भी लोग ऑनलाइन इससे जुड़े हैं या इंडस्ट्रीज़ के लोग, एकेडेमिया के लोग, एनजीओज़ के लोग, जो भविष्य में आने वाली इस भारत देश की पीढ़ियों के भविष्य निर्माण के साथ जुड़े हैं, उनको अनुग्रहित किया है। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। इसी के साथ मंचासीन के.सी. मीना साहब, डायरेक्टर माइनिंग, नरेंद्र सिंह जी एंड और सभी गणमान्य व्यक्ति जो मंचासीन हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ कि मुझे आप सबके बीच आने का ये अवसर दिया। मैं समझता हूँ प्रोफेसर जे.एस. राजपूत साहब ने जिन बातों पर हम लोगों को ध्यान आकर्षित किया, उनके बता देने के बाद उस विषय पे बोलना शायद मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन मैं इतना प्रयास जरूर कर रहा हूँ कि जिन विषयों को उन्होंने सामने रखा है उनको समझने का प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसकी ओर मैं आप लोगों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा उन्होंने कहा, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर के साथ लर्निंग टू वर्क एंड लर्निंग टू प्रोग्रेस, ये एकेडेमिया, इंडस्ट्री एंड एनजीओज, तीनों ही टाइप की जो संस्थाएं हैं, उन सबको एक साथ लर्निंग टू वर्क एंड लर्निंग टू वर्क टुगेदर एंड लर्निंग टू बी टुगेदर, इसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। और ये वास्तव में अपने आप में एक पहला प्रयास होगा, और इस ओर कदम बढ़ाने के लिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने ये कदम बढ़ाया है, उसमें आप लोगों का भी योगदान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अधिक समय न लेकर के मैं आपके पास सीधी बातों पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, 3-4 चीज़ों पे, कि इनको हम किस तरीके से देखें या दिखाएं। मैं रिक्वेस्ट, मेरी 3-4 स्लाइड्स के जरिए मैं खाली आपको ये याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ that we had to acknowledge the third space। ये थर्ड स्पेस जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिस इज़ ब्लेंडिंग इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, एकेडेमिया, इंडस्ट्री ऑब्लिक्स प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल्स, इन तीनों के बीच में जो ये स्पेस बन रही है, जिसको कि थर्ड स्पेस की संज्ञा दी गई है। ये थर्ड स्पेस क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वाकई बहुत ही उपयोगी है आने वाले समय में। अभी तक हम सब आइसोलेशन में काम करते रहे, एकेडेमिया अपनी जगह चल रहा है, इंडस्ट्रीज अपनी जगह चल रही हैं एंड प्रोफेशनल्स अपनी जगह चल रहे हैं, बट इन तीनों को साथ आना, जैसा कि नई शिक्षा नीति के बारे में आपने देखा कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस की बात वो कर रहे हैं,
इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी तो है ही, मोनोडिसिप्लिनरी का दौर शायद ख़त्म हुआ। अब इस ओर हमें सोचना पड़ेगा, जो राजपूत सर ने भी कहा कि हाउ टू लर्न टू वर्क टुगेदर, साथ में हम कैसे काम कर सकें, एकेडेमिया, प्रोफेशंस एंड इंडस्ट्रीज़। और इसीलिए इस नीति के में प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस की भी बात कही गई है। उस पर शायद आने वाले स्पीकर्स जो हमारे साथ में दूसरे कंट्रीज से जुड़ेंगे, मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि मैं भी खुद एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ कि इनको वास्तव में किस तरीके से क्या शेप दिया जाएगा या आने वाले समय में इसका क्या स्वरूप बनेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड एंड मार्केटाइज्ड हायर एजुकेशन सेक्टर, जो आपको इस फ्लो चार्ट में दिख रहा होगा, आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि इसको कोविड के 19 के इम्पैक्ट से भी देखा जा रहा है, जिसने शायद इसको एक स्पीड दे दी है। जो स्केल और स्पीड की बात की जा रही है, वो आगे आने वाले समय में हमको इन बातों की ओर ध्यान दिलाएगी। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डुअल प्रोफेशनल्स एंटरिंग द एकेडेमिया फ्रॉम इंडस्ट्री एंड प्रैक्टिस बैकग्राउंड, जो लोग वास्तव में प्रैक्टिसिंग बैकग्राउंड से हैं, इस पे शायद मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि मीना साहब हमें हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। ये जो फील्ड में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास वाकई अनुभव है प्रैक्टिस का। अभी तक हम शिक्षण संस्थाओं में इंटीग्रेशन की बात करते रहे कि थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कंटेंट को पेडागोजी के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए। मैं समझता हूँ वो इंटीग्रेशन का दौर ख़त्म हुआ, अब इंक्लूज़न और इन्फ्यूज़न का दौर है। और इस इंक्लूज़न और इन्फ्यूज़न के दौर में किन किन चीज़ों को किस तरीके से इन्फ्यूज़ किया जाएगा, किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, ये आपकी और हमारी दोनों की समझ पर निर्भर करेगा। और वो ऐसे अगर शेयरिंग सेशंस आगे होते रहेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें हमें प्रगति करने का एक अवसर मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। नाउ दिस थिंकिंग स्पेस competencies, what are the competencies which are expected by this thinking space from the teacher training institutions, from the academia? We had to look upon, we are talking about 360-degree thinking, जिसमें आप लोग देख रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, राजपूत सर ने भी उसकी ओर ध्यान दिलाया। हमारा इक्वालिटी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इन सब की जो चर्चा हो रही है ना, ये 360 डिग्री थिंकिंग प्रोसेस को कैसे हम एडेप्टेबल बनाएंगे ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, हमें अपने लिए क्या उपयुक्त है, भारतीय संस्कृति और समाज को देखते हुए कौन कौन सी चीज़ें उपयुक्त हैं और किस तरीके से हमें अपनाना है, ये हमारी समझ पर निर्भर करेगा। एंड उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये भी हमें तय करना पड़ेगा। एंड विद द कोलैबोरेटिव स्पिरिट्स, क्रिएटिव एंड कल्चरल कॉम्पिटेंट एंड एम्पैथेटिक, इंटेलेक्चुअली क्यूरियस। अभी तक NCF 2000 में IQ, SQ और EQ की बात आपने सुनी थी, लेकिन इस दौर में दो और क्वेश्चंस जुड़े जिस पे वेस्टर्न वर्ल्ड में तो काफ़ी रिसर्च हो गई। वो है कौन सा, कोविड-19 की में जो परेशानियां झेली है ना, जितना लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ का, नॉट विद द मटेरियल ओनली बट द ह्यूमन लाइफ आल्सो, उन सब से जो लर्निंग्स हुई हैं उसने हमको ये सिखाया कि एडवर्सिटी कोशेंट के बारे में आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में ये एडवर्सिटी कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, सोशल कोशेंट, इमोशन कोशेंट ही नहीं, एडवर्सिटी कोशेंट
वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ जो ECCE का, दैट इज़ क्रिएटिव कोशेंट, क्रिएटिविटी की जो हम बात कर रहे हैं, वो नंद घर में किस तरीके से केसी मीना साहब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि वो हम लोगों का मार्गदर्शन देंगे ताकि हम लोग भी उनसे कुछ चीज़ें सीख सकें, आगे वाले दौर में उन्हें लागू कर सकें। Then interest, academic and peer culture has to be taken care of very well. Next, please. We come down to the last slide. I may request, next. ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ। जो एकेडेमिया से जुड़े लोग हैं वो अगर देखें तो ये थर्ड स्पेस जो साइंटिस्ट IIT या IIM से जुड़े लोग हैं, वो इस थर्ड स्पेस किसे कह रहे हैं? होम एंड स्कूल के बीच का जो स्पेस है, टीचर मॉडलिंग, which is reflected in this flow chart by me. ना ये थर्ड स्पेस है जो कल्चरल बॉर्डर क्रॉसिंग्स, ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत सी चीज़ों में कल्चरली बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, उन सब के ऊपर भी हमें बहुत ही सिंसियरली, सेंसिटिवली काम करना पड़ेगा अगर वास्तव में हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर इस देश को ले जाना चाहते हैं। तो कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी तैयार करनी पड़ेगी। कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी को लेकर के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों ही इस ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तब शायद हम आने वाली पीढ़ी के साथ चल पाएँ, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि याद रहे, ये टेक्नोलॉजी, ये अपना स्पेस निश्चित तौर पे हमारे जीवन में बना रही है, लेकिन यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। शायद जैसे माइक के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है, वो आप लोग भी न्यूज़ में देखते होंगे, वो माइक ज़ोर से बजा रहा है, ये बजा रहा है ना। आप कितना ही पढ़ा लें, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और इन सब की बात कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है वो मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को ये बात कहनी पड़ी, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जिस पर शायद पहले भी आप लोगों ने चर्चा की ना, वो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, वो सारे वही हैं जिनके ऊपर नई शिक्षा नीति 2030 तक उनको अचीव करने के लिए हम लोगों से अपेक्षा करती है कि हम समाज के अलग अलग भिन्न भिन्न जो कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, वो एक साथ आकर के राष्ट्र के निर्माण में कैसे। मुझे याद आता है, डर लगा रहा था, पता नहीं राजपूत सर सुन रहे कि नहीं, अक्सर वो कोठारी कमीशन का जिक्र उन्होंने किया 1964-66 का, जिसके बारे में वो पूछ बैठते थे कि कोठारी कमीशन का टाइटल क्या है? क्या है टाइटल? एनीबडी? कोठारी कमीशन का टाइटल ही है एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर नेशनल। तो ये पहली बार नहीं है कि जो राष्ट्र के विकास या निर्माण की बात की जा रही है। इस पे पहले भी कमीशंस और सभी ने इन बातों को लिखा, लेकिन ये विकास आप हम सब जानते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे गो हैंड इन ग्लव्स टुगेदर। बगैर रिसर्च के विकास, रिसर्च से मेरा तात्पर्य है एक व्यक्ति के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए, समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए क्या चीज़ तार्किक रूप से उपयुक्त होगी, ये कौन तय करेगा? ये मैं और आप तय
नहीं कर सकते। ये तो रिसर्च ही बताएगी और रिसर्च की फाइंडिंग्स के आधार पर ही हम आगे समाज को विकसित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अब ये जो प्लेटफॉर्म्स ऐसे निश्चित आ रहे हैं वो जिसमें इंटर्नशिप, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज़ें भी जो सीखने का अवसर हमें इंडस्ट्री के लोग प्रदान करेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का यूज़ डेली लाइफ में कैसे करना है और क्लासरूम सिचुएशंस में ख़ास तौर पे टीचर्स कैसे इन पोजीशंस को हैंडल करेंगे या कौन सी पेडागोजी अपनाएंगे जिसके ज़रिए आने वाली पीढ़ी को हम साथ लेकर के चल सकें, न कि वो एक द्वंद्व बन जाए कि मोबाइल क्लास में लाना है कि नहीं लाना है, इसको यूज़ करना है कि नहीं करना है, क्वेश्चंस टीचर क्या पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं अनगिनत, में समय नहीं है उन सब डिटेल में जाने का। लास्ट साइज प्लीज। ये इन्वेस्टिगेटिंग मोबाइल इंटरवेंशन इन पेडागोजीज इन स्कूल्स, हमारे विद्यालयों में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि मोबाइल इंटेंसिव पेडागोजीज इन स्कूल्स को हम किस तरीके से लेकर के जा पाएंगे। मैं आपका काफ़ी समय लिया, मेरी अपेक्षा है और चाहूँगा कि इन स्लाइड्स को आप सभी के साथ में अगर शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, ताकि इन चीज़ों पे आगे आप चिंतन करके और जो वास्तव में इस सेमिनार का उद्देश्य है उसको अपने लक्ष्य तक या अंजाम तक पहुंचाएं। मुझे आप लोगों को धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी पेशेंट हियरिंग एंड लिसनिंग। I do not know whether it was only hearing or listening. Now that you had to decide. Thanks a lot. Thank you so much, sir, for your knowledgeable words. It was very grateful listening to your experiences and ideas on the topic for today's seminar. I now take immense pleasure to introduce our next speaker for the ceremony, Mr. K.C. Meena. Mr. K.C. Meena is the Director Mining at Kayad Mines, Ajmer, Hindustan Zinc Limited. He has been conferred with B.Tech in Mining and MBA in Finance Management. He has more than 32 years of industrial experience and has worked 18 years at Rampura Agucha, Bhilwara, Rajasthan. He has worked for 4 years in Zambia, Africa, at the largest copper and cobalt mine, and worked as Director Mining at Rajpura Dareba Complex, as well as Kayad. I would like to invite Sir to share his ideas on the topic of our today's seminar. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like thanks to administrations. They have given me the great opportunity for this kind of seminars. So it's a great pleasure to me. I especially thanks to Dr. Shobhaji and thanks to all the managements, they have given this kind of opportunity to me. I don't have much knowledge about this education policies or about the educations, but I can express my views on this platform, and really thanks to Rajput Saab. He has given the valuable words about the educations and how our country can grow.
basically is the national education policies, how we are thinking. This is contributing to our country's growth. You know that how the country growth, and basically the country growth can depend on the two things. First is the agriculture and second is the mining. These are the two pillars. But how we can transform through the educations and how our education system are strong so that we can transform our education and this education can convert in the growth of the countries. And that really I appreciate Dr. Nagendra sir or Professor Nagendra sir. He has given it's the biggest role of the teachers that transform the people, transform the humans, transform the children so that they can be the very good humans, or I can say disciplined persons that can like having the civilizations in our nations. So that's why this policy is framed, and this policy is really in the 21st century is the great role for the society and for the nations. So this is the first policy amendment after a long time. I think since 1947, because we are working in the traditional way. But this traditional thinking, how we can change. So that is the important role. And for this, for this changing this educations in this policy, just I can give the brief about this policy, because this education system or this old education to new education systems, this country, or we can say our experts, they have developed the 5 pillars. And this how 5 pillars they will work in this education policies, like critical thinking, because this critical thinking having the important role, how you are getting the data, and this based on the data, how just like I can say go for the research, and based on the research you can develop the new like generations. And we have to go on the core essentials, just like in the engineering background I can, because I am the engineers. So in the basic engineering, like civil, electrical and mechanicals, these are the 3 basic engineering. But after that we have a lot of engineering background, like electronics, communications, data, social engineering, sociologies, all others. So that how we can interact and how we can be implement in the systems, and all these can be interlinked, or how we can make interactive, so that every persons who is in the society, they can grow. And if individual grow, then country will grow. And definitely the teacher having the great role on this. And that in the lastly, experimental learning, like you people are putting your best efforts on this, like giving the educations. But you know that how they can learn, like children, like maybe students, how they can learn. Like when they are seeing the some things, they can learn better. So that educations we have to interlink with the experimental base, just like in the new children's. If you go for some experimental base, then I think they can learn better. So these are the 5 pillars for these policies. Now coming to this, maybe this other also, how we can like improvement our diversity also, because we have to go on the diversity. Now in today's era, we have an important role of the diversity, and diversity can play the great role. Like earlier we have a different kind of mindset, but today we have a different kind of mindset. And this
We have a different kind of, but ultimately we have to like interlink with the society also. So area also, geography also, we have to see in the different aspect, so that the people who are sitting in the Ajmer, the people who are sitting in the rural, we can interlink. And if we can interlink them, then we can grow. And if everyone will grow in the country, then the country will grow. Otherwise, it is very difficult to grow, because certain people can grow and other people can deprive. Then country growth will be not able to what we want, because we are linked this growing, this country growth of the 2030 and 2050. So all these things, whatever we are seeing in today's era, that we have to think it differently in the different aspect. Then it can grow. Go to next. Now you can see the earlier era, that when I read in the school or college, or maybe in this, maybe I was then maybe around 6-year-olds and that time of reading. But nowadays, we have a different kind of cultures, different kind of mindsets. Like we want to our children's, maybe 18 years, he can go, or maybe 25 year age, he can go on the service and he can earn, or he can settle his life also. Because time has changed. Earlier we have people that maybe go on the service maybe 25 years or 30 years. But nowadays things have changed, because entire environment has changed. So ultimately we have to change our philosophy. So in this new policy, this 4-year course or maybe 5 years, the children's, they are working on the small schools or maybe in the play schools. And then after maybe 5th to 8th, they will go on this maybe kind of like, what we can say, this kind of academy. So there is maybe some examination systems, or maybe then after they can go in the college. So like when they go in the college, that time they have a different kind of mindset. Means they have a kind of perception what strength they have. Means like every day what we are talking, every parents, every industrialist, or every society members, they want to see their children in the different manners. Like they want to see that my child or my son may be better than me. Everyone wants. But like it's depend on the children's. What kind of environment you are giving, what kind of education you are giving, then it can grow. So environment in the beginning stage, that is the most important part in their life. Maybe go next. So just you can see you can see this, how the people, small people to go the bigger stage. So it's a different kind of strategy. I will not take much time. Maybe go next. Just you can see this, maybe what we are talking in the play schools. Because in the Hindustan Jinx, what we are doing, around maybe 25,000 of this Anganwadi, we have converted into the Nandgars. And in the Nandgars, every facilities for the children up to the this standard 4th or 5 year we can say. So we are providing at theirs. So in the Rajasthans, we have around 4,000 Anganwadis. And in Anganwadis, I think we can say this through the visual, through the what we can say play, through the maybe some other means of educations, we are providing the facility. So the people or the childs can learn. They can visualize what I am going to do for the nations, what I am going to do for my parents. So that kind of like he can start in the minds. And when he go for the next level, maybe class 8th or 9th, that he can learn more and he can get the more exposures in the industries. So that kind of facilities we are providing for the children's. Surrounding this our what we can say our operations. Maybe go for the next. Just like the maybe class 8 to 12, we are providing the different kind of education of the peoples. Maybe some kind of what we can say like plumbing, or maybe we are giving the different kind of education tours
for the children's. So at least they can understand how they want to see the country in the different aspect. Because what they will think in the beginning stage, they can grow accordingly. Because just I can give my example. Because when I was in the class that times, I have seen the one of the guy who was the overseers. I have never seen, and because I belong to the rural areas, there is no transport, no light even. So I saw one overseer, and he was driving the bullet motorcycles. So I was in that kind of philosophy that I want to go become the overseer. That was my philosophy. But after that, when I go in the maybe class 9th, that time maybe some school teachers or my relatives that brought me in the small towns, and he wants to like me in the arts student. I don't believe today in the arts, science or maths because it's a mind perception. But that time somebody has given me the kind of seeds in my minds that you become the overseer or you become the engineers. So then after my form maybe जो class 9th के अंदर जो stream में form होता है, 15 days it was stayed in my tables, or we can say in my house. I have never changed my mindset, and I become the engineers. So that was the story, and I have taken the science maths, and after that I went to the engineering in the 1984s in the MBM Engineering College Jodhpur. I passed out from there, and you know that how I get when I have in the beginning of my life, maybe in the class 8, I have a kind of seeds in my minds. So if you are teachers, or if you are good teachers, what Nagendra sir is saying, that if you are a good teachers, if you are putting the good seeds in the children's minds, then they become the king of the country, and then they can grow. So that is the most important in the life. And how we can grow, how they can grow, that is the depend on the how we interlink with the industry as well as our good education systems. And that's why this national education policy is built up by the experts. So that kind of we are doing in this our CSR initiative in the Hindustan Zinc. So it's not only the Ajmer, it's the entire country, and maybe around maybe 1,25,000 or 2 lakhs children, they are benefited. And today, like I can say, maybe 25 teachers they have deployed for this entire country, because this Vedanta is not working for in the Rajasthan's entire country, or maybe outside of the country, like in the South Africa, in maybe Armenia also, in Australia also we have an operation. So we are doing like this. So a lot of peoples and lot of philosophy we are generating for the children, and ultimately we are like improving the we are working for the growth of the nations, how we can increase our GDP. That's our aim. And similarly, when we go for this the college, or maybe just like in maybe vocational training, so we are giving the training of the people also, because when education system, like in the class, maybe when people will go in the engineering college, maybe in the 3rd year or 2nd year, then we are taking the peoples, and we are growing itself, we are grooming at there itself, so that how they can learn, how they can interact with the industrial environment to our education environment. And if in that period, maybe between maybe around 18 to 25, if we are giving the kind of industrial environment or any environment, then they have a different kind of mindset. Because once they come in the systems, they have a different kind of mindsets. So in this age, they have a different kind of thoughts in their minds. And if you have one idea, maybe good thoughts, that time if it can conceive, then I think they can grow very well. But when you are putting in the system after maybe college or maybe 25 years, 26 years, I think they will not go and not give the good ideas, and they will not grow. So basically purpose of this, idea, how we can interact
with the industry, with the college people, because once we are like interacting, we are giving that kind of environment, then our children's, our people, they can grow very well and they can benefit very good. Just I can give one more example here in the Ajmer. What we are doing, we are getting the 12th or 12th or maybe first year, second year students, and we are giving the training for the skill center, BPO, and just like technicians. So how they are benefiting? Maybe around 300 students are there, and some of the students, you can wonder, they have started the kind of entrepreneurship. They have started the app, just like I met 3 or 4 these electricians. They have started kind of website, or maybe they have created the network, and they have developed their own website, and they are doing the very good business, and every day they are earning. Similarly in the BPO also, so they are doing the, and ultimately this around maybe 300 like students, they go to the job at there. So like in this age, how we can turn from road to the like in this kind of environment, then we can think that our country ultimately grow. Because if we are giving, or we are कहते हैं ना कि हम किसी को दोष देते हैं, हम दूसरे को हम कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी. We have to develop our own system, we have to develop our own approach, we have to be disciplined. अगर हम कुछ करेंगे तो आगे लोग करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे. इसलिए मेरा एक ये है, एक इस जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम के थ्रू, we have to develop our own systems, and we have to learn more, and we have to generate idea, so that how we can interlink with the industry. And if we are interlinked with the industries, then you can see we can grow more. Because you can see this in the how mining industry is growing very well in the country. Because earlier in the South Africa, in the US, Canada, they are the developed country for the mining industries. But nowadays, you can say in India, we have a topmost of equipments in this country. And just I can see, like go on the next slides. People from the top, they are sitting on the top. Go on the next. People, they are sitting on the top, and they are running the equipment around maybe 600 meters below from the surface. Just you can see the bottom of the ground. The people who are just like you and me, they are sitting on the surface, and they are operating the equipment around 600-700 meters below from the surface through the through the database. So they are thinking like this. So how we can interact, how we can generate, and if you are seeing how we can make this kind of idea, then we have to grow. Because ultimately, if we are growing or we are thinking like that, then country will grow. And second also, I can see this, how this mining industry is growing, because the people who are sitting on the top, they can put a small stunt, just like our heart surgery. They are putting this one hole, maybe 700 meter or 1 kilometer or 2 kilometer stunt. And they can get the whole idea how we can get this silver, gold, and other minerals also. So this kind of technology today we have, but how we can improve this efficiency, because ultimately we need a skill. And how we need a skill? That the teacher plays a great role. They can provide the skill to all the children who are studying in the class, or maybe school, or maybe college. So that teacher has a very important role. But how we can take positive, and every person's, you can see the 137 crores in this country, and everyone has an asset of this country. How we can utilize that asset, that is the most important role. And we can utilize those persons who are sitting outside through the good education system, through the database, through the artificial intelligence systems, through the net technology. Like today, the people who are sitting in the London, or maybe Canada, or maybe we are interacting here. So that is the most important, and through the technology.
So, and this technology, then after how we can maximize the speed of this technology. Just like you can see that today, the 5G. So we have all this technology we have implemented. You can see the surface everyone is implementing, but we are implementing that around maybe 700 meter below ground from the surface, because entire network is we have developed at the underground. And people who are sitting in this underground, maybe 700 meter below from the surface, he can talk at anywhere of the world or anywhere or the country, and through this net technology. So that kind of education we have to develop. And this kind of education we have to develop through our children's, because they need a kind of exposure. So these exposures, when the people maybe in the class 10th or 12th, or maybe they will go in the college, then we have industry as well as our education systems or maybe college, they have to interlink, because we have to go on the more practical part. When I went to in the Zambia, when I discussed with some welder, just welders, small welders, you can see this welder is that जो जैसे अपने राजस्थान के अंदर गली के अंदर बैठा रहता है टाँके लगा रहता है, but they have developed a very good systems that how we can weld these machines. And you know that he know about only this welding, he doesn't know anything. If you talk, gentlemen, what you are doing? No, I don't know. I don't know. Straight away. So that expertise we have to generate. And how we generate that, we have to improve our education systems. We have to interlink with this our industries, because when people will see this industry, then definitely this kind of mindset they will come. You know that our diversity systems, that here we are mainly just our women, they are going in the education system only. But you know that in the foreign countries, this 300-ton trucks, this is operated by this our women. 400-ton trucks, they are operating by the women. So that is the most important role. So what I am trying to say, that how we can improve our technology, how we can interact with the industries, that is the most important role in this education system. And through this artificial intelligence systems, how we can visualize our data, how we can get the data fast, and then serve to the industry as well as the education system, as well as our society. So that society, ultimately our aim is to grow our society, not the industry, not like education. Ultimately our aim, entire aim is to grow the society. And society can grow through our education system, society can grow through our economic systems, how we can improve our economic of that state, and ultimately then we can improve our entire whole world. And then ultimately our country will grow, and this growth is depend on our gurus, what he's trying to say, that is the gurus. So you people are the guru, and you will give the better education to the people, and we have to set interlink between this our what we can say industry as well as the education system. Then we can make the country, and we can sync with this our what we can say this policy of this our country, and then we can grow. So thank you very much all, and you have given me the good opportunity to speak here. So thank you very much. Thank you. धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि हम किस प्रकार शिक्षा को देश के विकास के लिए हम किस प्रकार एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस प्रकार हम स्टूडेंट्स को प्रभावशाली तरीके से सीखना सिखा सकते हैं, और किस प्रकार वे हमारे इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एक प्रशिक्षित व्यक्ति बन करके और इस देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं आप सबको पहले परिचय देना चाहूँगी माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी सर का। श्री नरेंद्र सिंह सर गांधीधाम सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट के सचिव पद पर कार्यरत हैं।
यह संस्था विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए स्वास्थ्य व बाल संरक्षण योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए कार्य कर रही है। सर पिछले 22 वर्षों से इस क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही सर सोशल वर्क में मास्टर्स हैं। साथ ही सर का डॉक्टोरल रिसर्च वर्क टोबैको स्मोकिंग विषय पर चल रहा है। सर के इस क्षेत्र पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा सर ने कई नेशनल व इंटरनेशनल सेमिनार यूएसए, दुबई, अबू धाबी इत्यादि देशों में ग्लोबल लीडरशिप डेवलपमेंट के विषय पर ज्वाइन किए हैं। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी सर। Respected today's chief guest, Professor Rajput Sahab, Professor Nagendra Singh ji, Professor Harinder Singh Jodha, Shri K.C. Meena Sahab, Madam Misra, and all our team members of this prestigious institution. So I would be speaking on different area that is touching to human life. Before going into detail, I would try to know from you people. So in which language you are comfortable with? As I see from here, most of the students sitting here are from B.Ed course. And I should know their teaching language. So आप किस उसमें लैंग्वेज में अध्ययन करते हैं? हिंदी में. So I think you will be more comfortable in interacting in Hindi, so that you will be benefited more from this session. So I would be touching more on human lives, how this society is converting the lives of vulnerable children into more meaningful life. So ये गांधीग्राम सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रस्तुतिकरण मैं आपको दे रहा हूँ, ये सोसाइटी जो है अजमेर में कार्यरत है, लेकिन इस सोसाइटी के जो मेंटर्स हैं, जो इस सोसाइटी को रन करने वाले लोग हैं, जैसे मैडम यहाँ पे रन कर रही है, मैडम ने बताया कि काफ़ी शाखाएं हैं, काफ़ी, तो इसी तरीके से इस सोसाइटी यहाँ 2018 में शुरुआत हुई, लेकिन इसके जो संचालक मंडल के सदस्य हैं उनको करीब 20 साल से ऊपर का अनुभव था इस सेक्टर का, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया कि अजमेर में इसकी शुरुआत की जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, लेट एवरी चाइल्ड टू लिव विद डिग्निटी एंड करेज, दैट इज द विजन। सो विजन ये है कि प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने सम्मानपूर्ण और रेस्पेक्ट के साथ अपना जीवन यापन कर सके। सो आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग तो सब सम्मान से ही हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि यू बिलोंग टू फैमिलीज हु कैन अफोर्ड गुड क्वालिटी एजुकेशन, लाइक ये दिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशन में तो आपके जो घर वाले लोग हैं वो वहन करते हैं ये सारे एक्सपेंसेस आपके, तो आप गांव से आके भी यहाँ पढ़ पा रहे हैं। लेकिन हमारे साथी जो इस समाज के अंग हैं, जो कहीं छूट गए हैं, उसके लिए ये सोसाइटी कार्यरत है। ये सोसाइटी चाहती है कि उन बच्चों को भी साथ में लाया जाए, जिससे हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे हमारा इंडस्ट्री है, उसमें वो लोग कंट्रीब्यूट कर पाएँ और हमारे समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, और जो हमारे दूसरे जो गलत चीज़ें हैं उसको भी हम कंट्रोल कर पाएँ। तो ये ड्यूअल अप्रोच है, एक तरफ जो है इनका भविष्य बने और दूसरी तरफ समाज में भी जो गलत चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है जो प्रोडक्टिव काम नहीं करेगा जो बच्चा, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए
और सभी के लिए समस्या है। तो हमें उस दिशा देने की ज़रूरत है। तो उसी ध्येय के साथ में इस सोसाइटी ने अजमेर में काम शुरू किया। 2018 में सोसाइटी ने काम शुरू किया और ये देखने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट स्लाइड आप दिखा सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये देखने की ज़रूरत है कि अजमेर में यदि कार्यरत हैं तो अजमेर में ऐसा क्या है भाई आप, क्योंकि जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जयपुर में रहता हूं, लेकिन हम लोग अजमेर से जुड़े हुए हैं। अजमेर में ये सोसाइटी रन करती है, तो अजमेर के बारे में जानना ज़रूरी है कि वास्तव में यहाँ प्रॉब्लम है या नहीं है। जिस इशू पे हम लोग काम कर रहे हैं उस इशू पे काम करने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। इसलिए मैंने ये देखा इधर कि अजमेर की जो पॉपुलेशन है वो करीब 25 लाख के आसपास इस ज़िले की पॉपुलेशन है। करीब 6 लाख पॉपुलेशन जो है वो अजमेर सिटी की है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे कीप कमिंग, हमेशा आते हैं अजमेर में। क्योंकि हम लोगों को जैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे हर प्रदेश का व्यक्ति अपने परिवार सहित और अकेले अजमेर दरगाह शरीफ को घूमना है या फिर अजमेर में ब्रह्मा मंदिर को विजिट करना है। काफ़ी रिलीजियस कारणों से और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इधर आते हैं। और इस जो सिटी है, ये जो शहर है, इसकी खूबसूरती एक और है, यहाँ पे प्रत्येक धर्म का व्यक्ति इधर रहते हैं, वो अच्छे से रहते हैं और काफ़ी डाइवर्सिफाइड कल्चर है। चाहे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, सभी जैसे मैंने इसमें देखने का प्रयास किया, सभी पॉपुलेशन बड़े आपसी सामंजस्य से रहते हैं। तो ये डाइवर्सिफाइड कल्चर, ये लार्ज माइग्रेशन और ये रिलीजियस और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन होने की वजह से, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे मैंने ये देखने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1 लाख से ज़्यादा लोग कुछ लो लाइन एरिया, स्लम एरिया उसमें निवास करते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे स्लम में चाहे तो एडिक्शंस की प्रॉब्लम है, चाहे फैमिली डिस्प्यूट्स की प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ एंड हाइजीन की प्रॉब्लम है, चाहे पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे प्रेवलेंट हैं। इसलिए ये ज़रूरत पड़ी कि इस अजमेर में, जो कि एक शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, वो 20% लोग कैसे छूट गए हमारे साथ में आने से? वो 20% लोग भी हमारे साथ में होने चाहिए, इसलिए ये संस्था कार्यरत है। तो अब मैं आगे और थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये सब काम करने के लिए क्या ज़रूरत थी। बच्चों पे काम शुरू किया, हमने देखा कि ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड लिव विद करेज एंड डिग्निटी। उसका डिग्निटी इंश्योर करने के लिए क्या कानून की जानकारी आवश्यक है। आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग शिक्षाविद हैं, टीचर्स बनेंगे थोड़े दिन में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते आपको इस भारत के सारे जो नियम कायदे कानून हैं जो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, वह जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से कमेटी, कौन सा कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया। अभी डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे कोई कमेटी के बारे में, एजुकेशन कमेटी, एजुकेशन पॉलिसी, ये सब जो है उसमें सब है, तो हमें जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों के साथ में यदि ये सोसाइटी कार्यरत है, इसमें नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन 2016, जे एक्ट एक कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, उसके बाद उसको नया भी आया 2021 में। तो इसमें क्या क्या प्रावधान हैं बच्चों के बारे में, उनके शेल्टर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके अभी गुड टच बैड टच भी काफ़ी आपने सुना होगा, उसके बारे में आप देखिए। इसमें लिखा है चाइल्ड राइट्स, बच्चों के क्या अधिकार हैं। हम लोग घर परिवारों में अधिकार की बात करते हैं, किसी स्कूल में किसी टीचर ने बच्चे को हाथ लगा दिया तो बोलते हैं साहब ये तो जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट हो गया। लेकिन आप देखिए जो राइट्स है, वो जो 20% बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो छूट गए हैं, वहाँ पे भी उनके राइट्स हैं। राइट टू एजुकेशन की बात करें,
राइट टू हैव ए क्लीन एंड क्लियर वाटर की बात करें, राइट टू हैव ए न्यूट्रिशियस फूड की बात करें, राइट टू सर्वाइवल की बात करें, ये सारे राइट्स जो है उन बच्चों के भी हैं। ये सोसाइटी उसके लिए कार्यरत है। इसी तरीके से काफ़ी बड़ी संख्या में आपने देखा होगा इंडिया में प्रॉब्लम है, राजस्थान में है और अजमेर भी पीछे नहीं है। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है। बच्चे जो है चाहे तो अपने परिवार के आय के में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए चाइल्ड लेबर में लग जाते हैं। कुछ मजबूरियां रही होंगी, कई बार हमने ये भी देखा है पिताजी जेल में है, माताजी अशिक्षित है, बच्चा जो है साइकिल की दुकान पे पंचर निकाल रहा है, उसकी मजबूरी है। ये चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ है। तो क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे हैं आज इधर जो इंटरनेशनल सेमिनार में, क्या हमारी पॉलिसी जो है इन सब चीज़ों को एड्रेस कर पाएगी और हम लोग कैसे इनको भी साथ लेंगे? आप देखिए हिंदू अडोप्शन, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके माँ बाप नहीं रहते हैं, क्या वो अडोप्शन में जा सकते हैं, फैमिलीज में जा सकते हैं? इस तरीके से इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो खरीद फरोख्त भी होती है बच्चों की, कई बार हमने तो सुना है कि महिलाओं की भी जो है लोग जो है दूसरे प्रदेशों से पैसा दे के इधर महिलाएं भी आने लगी हैं। लोग वो उनकी मजबूरी होगी, वो बात अलग है, लेकिन ये पैसे से ये काम करना ये गलत है, कहीं भी इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरीके से PCPNDT जो प्री नेटल प्री डायग्नोस्टिक कंसेप्शन वाला एक्ट है, जो लड़कों के प्रति परिवारों की जो चाह है उसकी वजह से ये कानून आया, तो ये भी एक ज़रूरी कानून है। HIV का एक कानून है, नारकोटिक्स की प्रॉब्लम अजमेर में काफ़ी अधिक है, उसका एक कानून है, UN कन्वेंशंस हैं। तो ये सब जो है जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो ये सारे कानून के बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये संस्था जब बच्चों के साथ काम करती है तो कहीं ना कहीं इन एक्ट्स का एप्लीकेशन आता है डे टू डे रूटीन में। जैसे मैं आपको अभी आगे एक दो एग्जांपल भी बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड आप दिखा सकते हैं कि इस सोसाइटी का जो टारगेट ग्रुप है, टारगेट वो ऑर्फन चिल्ड्रन विद क्रोनिक इलनेस का मायना ये है कि वो दीर्घकालिक अवधि के रोगों से ग्रस्त बच्चे, दीर्घकालिक मतलब वो उनके जीवन में बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं, जैसे HIV, जैसे हेपेटाइटिस, जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स। ये सब जो बच्चे हैं ये सोसाइटी के लक्ष्य समूह में आता है। इसी तरीके से फैमिली डिस्प्यूट्स के जो बच्चे हैं, जो फैमिली डिस्प्यूट के कारण कई बार हमने देखा है कि पिताजी मर्डर के केस में जेल में है या माता जेल में है या दोनों अलग हो गए हैं, तो बच्चों का केयर टेकिंग वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे बच्चे भी जो है टारगेट पॉपुलेशन में इस सोसाइटी के आ रहे हैं। चिल्ड्रन विद कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, कोई बच्चे जो है वो किसी ना किसी कारण से कानून के उसमें दायरे में आ गए हैं। वो रन अवे चिल्ड्रन की भी प्रॉब्लम अजमेर में काफ़ी है। यहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं, रिलीजियस पर्पज से आते हैं, उनके भी बच्चे कई बार छूट जाते हैं। कई बार तो वो जानबूझ के रन अवे हो जाते हैं और कई बार जो है वो गलती से भी बिखर जाते हैं, क्योंकि कई बार जो ना बहुत भीड़ भाड़ है ऐसे एरियाज़ में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। चाइल्ड लेबर एनफोर्समेंट एजेंसी, वो भी ऐसे जगहों पे जब बच्चे पाए जाते हैं तो उनको कैच करते हैं वो और ऐसे इंस्टीट्यूशन में डालते हैं। जैसे ये चंचल केयर होम, गांधीग्राम सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट द्वारा संचालित जो चंचल केयर होम है, वहाँ पे करीब जो है हर महीने 2, 4, 5 केस ऐसे आते हैं। चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर्स, चिल्ड्रन ऑफ डोमेस्टिक हेल्प, ये प्रिजनर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्प है, इनके भी बच्चों को एक देखभाल की जरूरत है। नेक्स्ट, ये जब केयर होम शुरुआत हुआ 2018 में, तो इट वाज स्टार्टेड विद फ्यू चिल्ड्रन, only you can see only 7-8 children were there and one woman was taking care of them. So इनका जो फोकस एरिया था उनको हेल्थ केयर देना, लगातार उनका जो भी इन्फेक्शंस हैं, बच्चे ऐसे सिचुएशन से आ रहे हैं तो हो सकता है स्किन प्रॉब्लम हो सकता है कोई दीर्घकालिक अवधि का भी इन्फेक्शन हो, जैसे HIV का इन्फेक्शन हो सकता है मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी बहुत आते हैं। तो उनका हेल्थ केयर के बारे में टेकिंग केयर करना, उनके एजुकेशन के बारे में, यदि एजुकेशन फॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं ठीक है, लेकिन कोई स्पेशल चाइल्ड है
जो बोलना नहीं जानता है उसकी एजुकेशन कैसे होगी, जो जिसका आईक्यू लेवल कम है, जिसको स्पेशल चाइल्ड कह सकते हैं, डिसेबल्ड कैटेगरी वाले, उनका एजुकेशन कैसे होगा, उनकी फैमिली लाइफ कैसे होगी। फैमिली जो बच्चे रन अवे हो गए हैं उनको भी परिवार की ज़रूरत है। तो ये संस्था ये प्रयास करती है कि उनको भी एक परिवार मिले, एक संस्था के रूप में, एक शेल्टर के रूप में। वहाँ पे माता पिता होते हैं, वो उनका एक परिवार के रूप में टेकिंग केयर करते हैं। प्लेइंग, रिक्रिएशन, उनका जो बच्चे का जो अभी बच्चे को खेलना है, बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, हमारे परिवार में यदि बच्चे खेलते हैं तो इन बच्चों का भी अधिकार बनता है कि उनको भी खेलना चाहिए। तो ये खेलने की व्यवस्थाएं हैं, उनका जो न्यूट्रिशियस फूड की आवश्यकताएं हैं, ये सारी आवश्यकताएं ये संस्था के द्वारा स्थानीय जन सहयोग से और जो भी सरकारी जो विभाग हैं उनके सहयोग से ये सारी आवश्यकताएं पूरी की जाती है। नेक्स्ट, जो वर्किंग स्ट्रेटजीज हैं इस सोसाइटी की और इस केयर होम की, वो इस तरीके से हैं कि बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। सेफ एनवायरनमेंट इन द सेंस कि पहले वो अगर किसी हैजार्डियस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी गलत जगह में फंसे हुए हैं, तो उनको सेफ एनवायरनमेंट में लाना। उसके प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअल जो है प्लान बनाना। कोई बच्चा सीखने में कमज़ोर है, कोई बच्चा जो है हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो वो जो है उन सब बच्चों का अलग अलग तरीके से वहाँ पे प्लानिंग होती है और उनका टेकिंग केयर करते हैं। वहाँ पे फूड और गुड हेल्थ और एनवायरनमेंट, इनका सभी का ध्यान रखते हैं। इसके साथ में सभी बच्चों का काउंसलिंग डे टू डे लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है। आपका भी जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो कई बार लोग करते हैं कि भाई कैरियर काउंसलिंग, आगे कैसे जाना है, कैसे जाना, तो इन बच्चों की उस तरह की भी काउंसलिंग होती है। और जो छोटे बच्चे हैं वो सही दिशा में चलते रहें, उनकी डे टू डे काउंसलिंग भी होती है। लाइवलीहुड ट्रेनिंग जो वो भी उनको कराई जाती है, और इनके जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की कोई इश्यूज़ हैं तो उनको ट्रीटमेंट वो सब लगातार नेक्स्ट किया जाता है। अभी तक जो 2018 से अभी तक जो की डिलीवरेबल हैं वो मैंने नट सेल में इधर बताने का प्रयास किया है। 137 बच्चे को अभी तक जो है विभिन्न प्रदेशों के, चाहे तो कल ही एक बच्चा जो है हमारे वीरेंद्र जी जो है, कल ही एक बच्चा गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर्स के साथ में उसको ट्रेन पे बैठा के आए हैं। वो बच्चा आसाम के किसी ज़िले का है। अब आसाम का बच्चा इधर आ गया अजमेर में, अब आसाम का बच्चा दिल्ली में जाता है, मुंबई में जाता है, वो अजमेर में आ गया। अजमेर में आ गया तो उसको अजमेर में रखना नहीं है, उसको उसके घर पहुंचाना सुरक्षित। तो वो जो है बच्चा शायद 1 डेढ़ 2 महीने से इनके पास में था, लेकिन उसको घर पहुंचाना है। तो विभिन्न प्रदेशों के बच्चे, अब ये जो 137 बच्चे घर पहुंचाए, उसमें से 28 बच्चे ऐसे थे जो दूसरे प्रदेशों के थे, चाहे तो दिल्ली है, आसाम है, यूपी है। तो ये जो भी उनको ट्रेस करना, ट्रैक करना, ये सब ये सोसाइटी करती है। क्यों, पहला उनका ध्येय यही होता है कि वो बच्चा परिवार में जो संस्कार लेगा वो कोई भी संस्था जो है उसको दे नहीं सकती। इसलिए परिवार इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू डेवलप द चाइल्ड इन नेचुरल वे। सो ये प्रयास रहता है। इन सब में जो बच्चे आए उसमें 6 बच्चे MR बच्चे आए, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं। उनका भी कैसे उनका जांच करवा के मेडिकल बोर्ड से उनका सर्टिफिकेट बनवाना और फिर उनको उससे लाभान्वित करवाना। इस समय आज की तारीख में 37 बच्चे वहाँ पे रहते हैं। ये स्टोरी आपने देख रहे हैं इधर, ये स्टोरी इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये शायद सितंबर महीने का स्टोरी है या फिर अक्टूबर की 1-2 तारीख की स्टोरी है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी स्टोरी। एक बच्चा 2 साल से अपने घर वालों से कोविड में जो है वो अलग हो गया, एंड द चाइल्ड वाज टोटली स्पीचलेस। वो बोल नहीं सकता था, वो बता नहीं सकता था कि वो बच्चा कहाँ का है। उस बच्चे का कोई आईडी नहीं, कोई आधार नहीं, कोई कुछ नहीं, कागजात नहीं। आप लोगों ने ये मेहनत किया और उसका लगातार जो है प्रयास करके BSNL से लगातार कोऑर्डिनेट किया, ई-मित्र से लगातार कोऑर्डिनेट किया कि भाई इसका आधार कैसे बन सकता है। फिर उसका आधार फिंगरप्रिंट से जैसे उसका आधार बना, इसमें करीब पहले तो कोविड का समय रहा, उसके बाद में आधार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो 1 साल लगभग उसको आधार को ट्रेस करने में लगी। उसके फिंगरप्रिंट से बच्चा पता चला कि ये बच्चा जो है ये भीलवाड़ा में किसी गांव का है। और जब उसके घर वालों को सूचित किया गया
तो दे वर वेरी हैप्पी कि भाई ये 2 साल तक हम लोग इतना प्रयास कर रहे थे, ये बच्चा कहीं मिला नहीं। और क्योंकि बच्चा दैट वाज टोटली स्पीचलेस, वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उस बच्चे को ढूंढा गया और उसको, अब ये नीचे वाला फोटो आप देख रहे हैं, उसके जब घर वाले आ रहे हैं तो बच्चा हैप्पी महसूस कर रहा है, बहुत बहुत खुश हो रहा है अंदर, ये तनु का इमोशंस। तो मैंने स्पेशल रूप से वीरेंद्र जी को, हमारे स्टाफ को ये रिक्वेस्ट किया था, आप जब वो बच्चा वो घर वाले मिले उस मोमेंट को जरूर कैप्चर करना, आप देखना उसके क्या इमोशंस हैं। जब आपको पता चलेगा कि वो बच्चा कोई घर में कोई प्रॉब्लम की वजह से भागा था या फिर वैसे ही जो है लापता हो गया था, तो इनको पता चला कि वो इनमें बहुत इमोशंस है, बहुत बॉन्डिंग है, स्पीच की वजह से वो अलग हो गया और वो बता नहीं पाया 2 साल तक, और वो बच्चा वहाँ पे पहुँचा। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये भी एक रिसेंट इसी मंथ का एक जो है इधर लगाया है मैंने रात को ही, ये एक बच्चा जो है आप देख रहे हैं पति को उतारा मौत के घाट। तो अब ये कोई महिला जो है ड्यू टू सम रिलेशनशिप, तो ये सब हो गया। ये अजमेर का आपका न्यूज़ क्लिपिंग है। तो ये बच्चा जो है इधर आया, तो इसका क्योंकि माता जो है वो अभी जेल में है, पिता जो है उसको मार दिया गया, डेथ हो गया है, माता जेल में। अब इस बच्चे का क्या होगा? ये बच्चे का जिम्मेदारी इस केयर होम ने लिया, इस संस्था ने लिया, और उसका जो है डे टू डे केयर टेकिंग कर रहे हैं। ये डे टू डे केयर टेकिंग के साथ में कैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी उसको हेल्प कर सकता है, तो लीगल एड अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी हैं, ऑफिसर हैं, वो उसको 2 लाख रुपए का चेक जो है उसके भविष्य के लिए उन्होंने एफडी करवाया है। ये गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से हुआ। ये ऐसा कोई नहीं है, कोई इंडिविजुअल हेल्प नहीं है, ये गवर्नमेंट सिस्टम, कैसे गवर्नमेंट सिस्टम हेल्प कर सकता है इन बच्चों को। तो ये अभी 10 दिन पहले का स्टोरी है, अजमेर का ही है ये स्टोरी, आपने भी शायद देखा होगा, पढ़ा होगा। इसी तरीके से आप ये बच्चे हैं, ये जो भी नेक्स्ट यहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये लगातार भाग लेते हैं। नेशन बिल्डिंग की जो भी स्टोरीज हैं उसमें सभी में, जो भी हमारे नेशनल इम्पोर्टेंट डे होते हैं, डे ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, उस सब में यहाँ अजमेर में लगातार उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस तरीके से ये संस्था आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट, तो ये जो है केवल एक स्टार्ट है। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि इस संस्था ने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये दिस इज़ गुड स्टार्ट बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अजमेर सिटी, कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लुक आफ्टर करने के लिए हमारे बीच कुछ स्वयंसेवक हैं जो ऐसे बच्चों को भी इस एजुकेशन पॉलिसी को लाभान्वित करने के लिए वो कार्यरत हैं कि कैसे हम नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये जो तबका है जो छूट गया है, जो हमारे विकास के जो हमारी गति है उसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, उसको हम कैसे साथ में ला सकें। तो ये संस्था और ये हम सब लोग जो टीम मेंबर्स इसी के लिए कार्यरत हैं। मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और इसके बारे में और भी कोई चर्चा करनी हो तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी एजुकेशन आपने ली है, आपने शिक्षा का क्षेत्र चुना है, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। आज हम यही चर्चा कर रहे थे कि दूसरे बिजनेसेस हैं, ये हैं, लेकिन टीचर एक ऐसा नोबेल प्रोफेशन है जिसमें आप किसी का भविष्य बना सकते हैं, किसी को शेप दे सकते हैं, किसी को आकार दे सकते हैं। एक बच्चा जो है एक बहुत ही उसका माइंड एक मतलब वो डेवलपिंग स्टेज होती है। जब आप उस बच्चे के साथ में कार्य करते हैं, लगातार डे टू डे इंटरेक्शन करते हैं, तो उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, उस टीचर की पर्सनैलिटी उस बच्चे में दिखती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी जाएं, गवर्नमेंट में जाएं, प्राइवेट में जाएं, कम से कम जहां भी आप रहें, ये जरूर आश्वस्त करें, सुनिश्चित करें कि आप जिन भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन भी बच्चों को आप अपना शिक्षा दे रहे हैं, वो कम से कम देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। देश के हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, चाहे तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। सभी लोग यूट्यूब चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी बुक्स हैं उनकी लिमिटेशन होती है,
तो हम लोग आजकल क्या है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे सर्च कर लेते हैं, तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे जो है नए ज्ञान को भी उसके अंदर ले सकते हैं। आप जो है जहाँ भी रहें अपने ज्ञान में, ये अथाह समुद्र है, हमारे बीच काफ़ी लर्नेड लोग हैं, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अभी वो डायरेक्टर साहब ने जो माइनिंग की बात करी, डायरेक्टर साहब ने बताया कि कैसे 500-600 मीटर गहराई पे लोग हमारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। वो सब हमारे बीच में ही हैं, लेकिन उनमें जज्बा है, टैलेंट है और कुछ करने का है। तो इसी तरीके से आप लोग मेन चीज़ें, जैसे मैं बताऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हर कंट्री के कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं, हेल्थ के हैं, एजुकेशन का भी होगा, वाटर हाइजीन का भी है। तो उसमें हमारी क्या अपेक्षा है, 2030 तक हम कहाँ जाना चाहते हैं और आज हम कहाँ हैं। जैसे आपके अजमेर में एक लेक, बहुत अच्छा लेक है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि क्या इस लेक के पानी से अजमेर की प्यास बुझ सकती है या नहीं बुझ सकती है। तो हमारे इंजीनियर्स लोग ज़रूर इस पे काम करेंगे। कई कंट्रीज़ में, जैसे आप विदेशों में गए हैं, आपने देखा होगा, और मैंने भी ये मेरे साथियों से और मेरे सीनियर से ये मैंने सुना है कि नीदरलैंड, हॉलैंड ऐसे देश हैं जहाँ पे वेस्ट वाटर और को भी ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ तो उस वेस्ट वाटर से इरिगेशन भी नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो वेस्ट वाटर को और वो किचन वाटर और वो गार्डनिंग, वो सब कनेक्टेड है। तो ये सब लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोकल रिसोर्सेज भी हैं। ये हमारे शिक्षा के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसे इनसे यूटिलाइज करें, हमारे समाधान लोकली खोजें। क्या इतना बड़ा जो वाटर सोर्स है, अभी तक हो सकता है कि कोई टैलेंट, आजकल बच्चों में बहुत टैलेंट है, सब लोग विदेशों में भी पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ भी हमारे जो IITs हैं वो काफ़ी रिसर्च कर रही हैं। अभी जैसे चाहे तो कोविड के टीके की बात हो, चाहे उसको कंट्रोल किया है, तो इसी तरीके से ये जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसके लोकल सॉल्यूशन हमें खोजने होंगे, तो हमारा समाज भी खुशहाल होगा और हमारे रिसोर्सेज भी काम आ सकेंगे। तो अब मैं मेरी बात यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और आपने गांधीग्राम सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट को आपने आमंत्रित किया इस इंटरनेशनल सेमिनार में, सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज में। इसके लिए मैं संस्था की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य में जब भी आपके आयोजन इस तरीके के हों, आप ज़रूर इनवाइट कीजिए। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए कैसे ये बच्चे जब उसमें जाते हैं, स्लम्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, अपना वो डिजर्टेशन करते हैं, टीचिंग का प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके उन बच्चों के साथ में भी दे कैन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस कि इस तरीके के बच्चों के साथ भी टीचिंग करना क्या चैलेंजिंग है, क्या नहीं है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लगातार, क्योंकि ये संस्था जब अजमेर में कार्यरत है और ये सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो हम चाहेंगे कि हम लगातार एक काम करते रहें और हम इस काम को आगे बढ़वाएं। धन्यवाद। Thank you, sir, for enlightening us with your dynamic knowledge of the topic. Further, I would request Mr. Arush T.N. Mishra, sir, Secretary of Central Academy Education Society, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Respected chief guests for today's seminar, Padma Shri, Professor J.S. Rajput, special guest, Professor Nagendra Singh, speakers, Mr. Harendra Singh Jodha, Dr. Neetu M. Shukla,
Mr. Manoj Sharda, Mr. K.C. Meena, and Mr. Narendra Singh. President, Central Academy Education Society Ajmer, Dr. Shobha Suman Mishra. Treasurer, Central Academy Education Society Ajmer, Dr. Neha Mishra. Principal, Dr. Varsha Nalme. Dignitaries, members of the audience. I deem it great honor and privilege to deliver the vote of thanks on this momentous occasion, a day that will be remembered as an important milestone in our journey towards imparting quality education and nurturing the academicians of tomorrow. First and foremost, I thank Honorable Professor J.S. Rajput sir, whose very presence, in spite of his exacting engagements, is a reflection of his commitment towards education and educators alike. We are all inspired by your gracious presence. On behalf of the Central Academy fraternity, I extend a very warm vote of thanks to you, sir. I would like to express a hearty thanks to our special guest, Professor Nagendra Singh, for his enriching and visionary presence here with us. I also sincerely thank our speakers, Mr. Harendra Jodha, Dr. Neetu Shukla, Mr. Manoj Sharda, Mr. K.C. Meena, and Mr. Narendra Singh for joining us in this seminar. We are privileged to host such a great panel of experts. I thank the President, Central Academy Education Society Ajmer, Dr. Shobha Suman Mishra, for her stewardship, patronage, and vision. I thank the Treasurer, Central Academy Education Society, Dr. Neha Mishra, for her direction to the institution. I thank the Principal and Convener of the seminar, Dr. Varsha Nalme, for her leadership and hard work in conceptualizing the seminar. I thank our organizing committee, led by Dr. Bhagchan Balot, for their enthusiastic support and dedication, followed by the technical team, led by Mr. Sudhakar Kumar, Mr. Vishnu Kumar, Mr. Kishore, and Mr. Mukesh Parihar. And also the Masters of Ceremony today, Dr. Ragini Tripathi and Ms. Kriti Sharma. I also thank the members of media who covered the event so enthusiastically. And lastly, to everyone in the audience for joining us. We hope you all join us on many such occasions as we command and conquer new heights and see a brighter future for the institution. Thank you so much. Thank you all. It was grateful listening to such great speakers among us. Their knowledge and their ideas would surely help us in enriching our future endeavors. For further session, we are again going to assemble at 1:35 in the auditorium. ऑनलाइन माध्यम से जो हमारे साथ शोधकर्ता, शोधार्थी एवं प्रतिभागी या हमारे जो भी कंटेस्टेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हम 1:35 पर हम लोग पुनः ये सेशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड सेशन होगा जो कि ऑनलाइन सेशन होगा और इसमें हमारे साथ होंगे श्री मनोज शारदा जी, प्रोफेसर नीतू एम शुक्ला जी एवं हरेंद्र सिंह जोधा जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Just attention, please. If you want to visit the guide mines any times, just give me call. बालोद साहब जो है वहाँ पे आपके वहीं के हैं और
मैं तो कहता हूँ कि मैडम से कि यहाँ की जो सीनियर मेंबर हैं और जो कभी भी आके विजिट करें, एक दिन प्लान करें, हमारे को एडवांस में इंफॉर्मेशन कहें. If you want to underground, that's okay. Maybe around maybe 5 to 7 or maybe 10 people, they can go underground and they can visit also. And if you want to surface and just see the activity of the industry, just you can come. So most welcome. Thank you very much.